हाय गाइस, इन्फोटेक ई लर्निंग क्लासेस को तुम मानक स्वागत करुछि। आज ए क्लास 1 रे हमें डिस्कस करिबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विषय। सो द गाइस, टू फाइंड द मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। नाउ here the first point is what is Excel. Microsoft Excel is a spreadsheet program available in the Microsoft Office package. MS Excel is used to create worksheets to sort the organized data in a table format and various types of mathematical formulas for solving day-to-day life calculation and many more. एक्सेल कहले हम कोन बुझिबा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेउची एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम जे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज रे उपलब्ध। दैनंदिन जीवन रे गणना एवं अन्य समाधान पई टेबल फॉर्मेट रे विभिन्न प्रकार गणितिक सूत्र तथा संरक्षण एवं संगठित करबा पई वर्कशीट सृष्टि करबा को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्यवहार करा जाय। Then our next point is about Excel. Like MS Word, here we can write less but its spreadsheet having 16,384 number of columns which are drawn from the top to bottom, named with A, B, C, D up to XFD, and 10,48,576 number of rows drawn from the left to right, named with 1, 2, 3 up to 10,48,576. एठारे MS Word पर हमें टेक्स्ट लिखि परिबा, किंतु एथिरे स्प्रेडशीट रही अछि। एही स्प्रेडशीट रे 16,384 कलम रही अछि, जहाँ ऊपर तल पर्यंत विस्तृत, जार नाम है ABCD अप टू XFD पर्यंत रही अछि। एथि सहित 10,48,576 रो रही अछि, जहाँ बामरु डाहन पर्यंत विस्तृत, जार नाम है 1, 2, 3 अप टू 10,48,576 अटे। देन हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि व्हाट इज spreadsheet. A spreadsheet is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data. Data in a spreadsheet can be numeric values as well as text, formulas, reference and functions. Spreadsheet हेउछि एक फाइल जहाँ रो एवं कॉलम रे संयोग होई एक सेल रे परिणत होई थाए एवं डाटा अरेंज हेबा सहित विभिन्न हिसाब पत्र फॉर्मूला माध्यम रे करा जाय। तत्सहित विभिन्न डाटा को हमें मध्य सजाडी रखिबारे स्प्रेडशीट सहायक होई थाए। हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि व्हाट इज सेल. द बॉक्सेस which are created due to cross over rows and columns are called as cells. Each cell is different from other and are named after column plus row, such as first cell is named as A1 and the last cell is named as XFT 10,48,576. row एवं कॉलम मिलित सृष्टि होथिबा बॉक्स गुडी को हमें सेल कहिथाउ। प्रत्येक सेल अन्य ठारू भिन्न एवं कॉलम और रो नंबर मिसी सेल गुडिकर नामकरण करा जाय थाए। जेपरि प्रथम सेल रे नाम होछि A1 एवं लास्ट सेल रे नाम होछि XFT 10,48,576। हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि व्हाट इज sheet. The working area filled with cells is called as sheet. By default, there are 3 sheets named as sheet 1, sheet 2, sheet 3. We can create as much as sheets as per our need. Cell गुडिकर परिपूर्ण वर्किंग एरिया को
आमे सीट कहि थाउ डिफॉल्ट भाव में सीट 1 सीट 2 सीट 3 नामक तीनोटी सीट रही अछि आमे हमर आवश्यक अनुसार सीट तैयारी करि परिबा। हमर नेक्स्ट पॉइंट हैला हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। हमर स्टेप 1 हैला क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हमर स्टेप 2 हैला क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। हमर स्टेप 3 हैला सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम द सब मेनू एंड क्लिक इट। हमर स्टेप 4 हैला सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 from the sub menu and click it. This will launch the Microsoft Excel 2007 application and you will set the following Excel window. Our next point is what are the components of Excel when you first open Microsoft Excel. You will see the basic components. प्रथम रही है ऑफिस बटन, तापर रही है क्विक एक्सेस टूलबार, तापर रही है टाइटल बार, तापर रही है रिबन, तापर रही है नेम बॉक्स, नेक्स्ट हम रही है फॉर्मूला बार, देन सिलेक्ट ऑल बटन, देन एक्टिव सेल, तापर रही है कॉलम हेडिंग्स, तापर रही है रो हेडिंग्स, देन शीट टैब स्क्रॉलिंग बटन्स, देन तापर रही है स्टेटस बार, देन तापर रही है शीट टैब, देन तापर रही है वर्कबुक विंडो, देन तापर रही है वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट ऑप्शन टी होछि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि व्यू शॉर्टकट्स। हमर लास्ट पॉइंट होछि जूम कंट्रोल्स। हम एही पॉइंट्स को प्रथमे हम डिस्क्राइब करबा। हमर प्रथम पॉइंट रही होछि व्हाट इज ऑफिस बटन। द ऑफिस बटन always you to open, save as, print documents and perform other documents output functions. ऑफिस बटन तुम मानकु डॉक्यूमेंट ओपन करबा, सेव एज, प्रिंट और अन्य डॉक्यूमेंट आउटपुट फंक्शन करबा पई सहायता करिथाय। हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि क्विक एक्सेस टूलबार। द क्विक एक्सेस टूलबार in Excel is a toolbar that contains commonly used Excel commands. It is very convenient for a user to perform the various tasks quickly without remembering any shortcut key for the command. For example, Excel provides print, undo and redo options in the quick access toolbar. एक्सेल रे क्विक एक्सेस टूलबार हेउची एक टूलबार जा साधारण यूज पई व्यवहृत हेउथिबा कमांड गुडी को धारण करिथाय। कमांड पई कोनोसी शॉर्टकट की मन न रखी उपरोक्त विभिन्न कार्य शीघ्र और अत्यंत सुविधाजनक अटे। उदाहरण स्वरूप डिफॉल्ट भाव में एक्सेल रे प्रिंट, अनडू, रीडो ऑप्शन रही अछि। हमर नेक्स्ट पॉइंट हैला टाइटल बार। The title bar displays both the name of the application and the name of the spreadsheet. Title bar रे उभय एप्लिकेशन एवं स्प्रेडशीट रा नाम डिस्प्ले करिथाय। हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि रिबन। Ribbon contains commands organized in 3 components such as tabs, groups and columns. Ribbon तीनोटी उपादान रे गठित सेगुडी कहला tabs, groups एवं commands. Our next point is tabs. These appears across the top of the ribbon and contain groups of related commands. Home, page layout are example of tabs. ए tabs गुडिको रिबन रो ऊपरी भाग रे देखा जाय थाए। एहा होम, पेज लेआउट इत्यादि को धारण करिथाय। हमर नेक्स्ट पॉइंट होछि ग्रुप्स। They organize related commands. Each group name appears below the group on the ribbon. For example, group of commands related to the clipboard, font, alignment, etc.
संगठित संबंधी निर्देशगुड़िक प्रत्येक गोष्ठीर नाम रिबन रे ग्रुप तले देखा जाए। उदाहरण स्वरूप क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट इत्यादि अटे। हम नेक्स्ट पॉइंट होची कमांड्स। Each group contain of related commands such as cut, copy, paste, bold, italic, etc. प्रत्येक ग्रुप्स तार संबंधित निर्देश गुड़िक धारण करते जेपरिक कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटालिक इत्यादि अटे। गाइस मु आशा करूँ ये क्लास टी आपण मानकु बहुत भल लगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करने भूलिब ना। थैंक यू फॉर वाचिंग।